Hi, today we will be studying the topic of challenges in an IoT. तो देखो बेसिकली चीज है कि मैं चाहूंगा तुमको रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करो. द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज बिकॉज टेक्निकल चैलेंजेस बीच में लिखना, बाकी सब चीजें मैं भी कवर करूंगा. एक चीज याद रखना, किसी भी चीज में सबसे जरूरी कॉमन चीज है किसी भी नेटवर्क को या किसी भी चीज को डिप्लॉय करते हुए, कॉस्ट. इसमें नहीं मिलेगा आपको नोट्स में, खुद से बता रहा हूँ. कॉस्ट. दूसरा क्या आएगा? स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी क्यों? कोई चीज जितनी ज्यादा स्केलेबल उतनी अच्छी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कॉस्ट महंगा तो स्केलेबिलिटी महंगी. समझे? पहला क्या? कॉस्ट. दूसरा स्केलेबिलिटी. थर्ड थिंग इज सिक्योरिटी. आईओटी सिस्टम यूजुअली चोरी होने के चांसेस भी होते हैं, प्लस उनको प्रोटेक्ट करना भी हार्ड होता है. कैसे? हवा, धूप, आंधी उन पर काम नहीं करना चाहिए. तो पहले की चीजें क्या? फर्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कॉल एज द कॉस्ट. सेकंड इज स्केलेबिलिटी. थर्ड इज द सिक्योरिटी. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आप कंबाइन कर सकते हैं. अब while designing a system, एक चीज याद रखना, the device should be power efficient, which is the power consumption should be low. But क्योंकि ये सब devices mostly modern है, they have low consumption but they also consume battery when they have to transmit data or do data heavy operations. So these are the challenges. One more thing which we have to think about the thing is that whenever we are using an operation in an IoT, the technical challenge which we face is connectivity issues. For example, you have made a good and a great type of a system, but it is not connecting due to the network issues. For example, most of us have seen that we have 5G mobiles and devices, but network अगर 5G नहीं है, तो it will work on 4G. और बहुत लोग के पास बहुत हाई एंड लैपटॉप है, बट घर पे इंटरनेट केबल ही नहीं है, तो उनको कनेक्टिविटी का इशू होगा. सेम थिंग फॉर द WSN और द IoT नेटवर्क एज वेल, दैट कनेक्टिविटी इश्यूज परसिस्ट. दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क नहीं है, अगर उसका कनेक्शन नहीं है तो वो हमेशा आपको प्रॉब्लम देगा. अब one most important thing which is very critical of IoT operations, क्योंकि most IoT operations are real time, which is latency. The moment you have a good connection and the minimum latency, your operation of an IoT network is successful. So keep that in mind whenever you're designing a system. These are some of the few things. You can write it down or take a screenshot of it and you can write and elaborate it, I think. So it was a short revision about the technical challenges of IoT, and I think it was enough. To give an example, in order to summarize, if you have a good IoT network which is capable of having a large network capability, you should have the cost to the minimum. The security should be highest. The privacy should be maintained. Power consumption should be low. It should be highly scalable. It should be highly interoperable. And most important thing, the connectivity issues should be less, and latency should be minimum. Or as we say in the real time, for doing the most operations. For example, there is a doctor sitting at a chair in Birmingham. He wants to do an operation in real time in India. He should have at least close to zero or negligible latency. The moment you have latency hitting an IoT system, your system fails because it will be working like a WSN. And what is a WSN? WSN is a wireless sensor network. So I think it was enough. And you can also write, due to the challenges we face, problems in implementation of edge computing and OSAP networks. So thank you.